हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम एटम्स चैप्टर से AIPMT 2010 एंड AIPMT 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम excited state n=3 to ground state n=1 and photons thus emitted irradiate a photosensitive material. If the work function of the material is 5.1 electron volt, the stopping potential is estimated to be the energy of electrons in nth state is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt, 5.1 volt, 12.1 volt, 17.2 volt, 7.02 volt. दिस इज न्यूक्लियस। अगर ये ग्राउंड स्टेट n=1 स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। फॉर दिस n = 3 और n = 1, तो E3 होगा, E3 विल बी minus 13.6 divided by n square और minus 13.6 divided by 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 divided by 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n = 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी माइनस 1.51 और जब n = 1 ग्राउंड स्टेट पे होगा E1, तो E1 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर EV, माइनस 13.6 EV। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n = 3 से n = 1 पर, तो एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के रूप में, दैट विल बी E3 माइनस E1 = माइनस 1.51 माइनस 13.6, 1.51 माइनस प्लस 13.60, ये आ जाता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी होगी 12.09 वोल्ट। अब phi work function is given as 5.1 EV। तो K max काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है E माइनस फाई वर्क फंक्शन 12.09 माइनस 5.10 इज इक्वल टू 6.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अप्रोक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल will be K max divided by E, charge on electron, 7 EV divided by E is equal to 7 volt. So stopping potential will be 7 volt. This D is correct option. Next, the wavelength of
first Lyman of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer series for hydrogen like ion. The atomic number Z for hydrogen like ion is 4, 1, 2, 3. वेवलेंथ होती है 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जेड इज एटॉमिक नंबर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. For Lyman series of hydrogen atom, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. आर 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर. फर्स्ट लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ होगा 1/लैम्डा आर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आर इंटू 1 माइनस 1/4 और 3/4 आर. आर की वैल्यू आ जाती है 4/3 लैम्डा. For Balmer series, second line of Balmer series for hydrogen like ion. For Balmer series, वन अपॉन, अगर इसको हम लैम्डा बी से डिनोट करें, आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. और सेकंड लाइन के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. एन की वैल्यू होगी 4. आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16 आर जेड स्क्वायर 16 4 माइनस 1 आर जेड स्क्वायर इंटू 3/16. तो लैम्डा बी becomes 16/3 r z square. This is equal to 2 lambda, and lambda is given as lambda is has been calculated as from here z is equal to lambda is equal to this is 4/3 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू है 4/3r. इसको रख देते हैं 4/3r. सिक्सटीन बाई थ्री आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3
आर, 3r से 3r क्रॉस हो जाएगा, 4z² इज इक्वल टू 16, z² इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू √4, 2. तो z की वैल्यू इज 2. Atomic number will be 2. C is correct option. Next, an electron in the hydrogen atom jumps from excited state N to ground state. The wavelength so emitted illuminates a photo sensitive material having work function 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, the value of N is 3, 4, 5 and 2. न्यूक्लियस, ये फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और so on. This is nth stationary orbit. For this कैपिटल एन से अगर डिनोट करें स्टेशनरी ऑर्बिट्स को तो दिस इज कैपिटल N/1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड लास्टली दिस इज कैपिटल N. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, this is first excited state this is first, second and third and fourth, and this will be n-1. So n is equal to lastly is n-1. जो सेकंड स्टेशनरी स्टेट है दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो थर्ड स्टेशनरी है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट. अगर हम स्टेशनरी ऑर्बिट देखें तो nth एक्साइटेड स्टेट विल बी n+1 stationary state. It means the capital N is equal to n+1. So nth stationary state will be n excited state plus 1. E capital N will be minus 13.6 divided by n square electron volt, and E1 will be minus 13.6 divided by 1 का square is equal to minus 13.6 EB, और इसको हम लिख सकते हैं minus 13.6 डिवाइड बाई स्मॉल n+1 का स्क्वायर EB.
photon energy of photon E is equal to En minus E1 is equal to minus 13.6 divided by n plus 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 -13.6 n plus 1 का स्क्वायर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Phi is given as work function 2.75 eV. Phi is equal to 2.75 electron volt, and stopping potential V is 10 volt. 10 volt. K max will be E into V. E into 10 is equal to 10 E. 10 eV. K max is equal to E minus 5, or E is equal to K max plus 5. K max is 10, or 5 is equal to 2.75, 12.75 EV, और E की वैल्यू है -13.6 डिवाइड बाय n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13.6. -13.6 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75 माइनस 13.60. 0.85 माइनस, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय माइनस 0.85. '85 1, 85, this is 1, and 5 0 6, this is 16. So n plus 1 is equal to root 16 is equal to 4. तो n की वैल्यू आ जाती है 4 माइनस 1 3. थर्ड स्टेशनरी n की वैल्यू है थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, n is equal to 3. A is correct option. Next, out of the following which one is not possible? Out of the following which one of the not possible energy for the photon to be emitted by electron by hydrogen atom according to the atomic model? 1.90 eV, 1.1, 11.1 eV electron volt, 13.6 electron volt, and 0.65 electron volt. जो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी होगी -13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर. फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -13.6 EV. E2 -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर -3.40 EV electron volt. E3 will be -13.6 3 का स्क्वायर is equal to -9.5
1 electron volt. E4 minus 13.6 divided by 4 का स्क्वायर minus 0.85. E5 is equal to minus 13.6 divided by 5 का स्क्वायर electron volt, and E6 minus 13.6 divided by 6 का स्क्वायर minus 3. Eight minus 0.38 electron volt, so on. E infinite is equal to minus 13.6 divided by infinite the square is equal to 0. Now number 1 jumps from infinite to 1, तो एनर्जी डिसिपेटेड होगी 0 माइनस 13.6 इज इक्वल टू 13.6 EV. दिस इज पॉसिबल. और अगर 3 to 2 then energy will be minus 1.89 or approximately 1.90 EV when jumps from here to here. 3 to 2, this is also possible. And jumps from 4 to 3, energy will be 1.51 minus 0.8566 EV, approximately 0.65 EV. This is also possible. 11.1 EV is not possible energy for photon to be emitted. Hence B is correct option.